poem today. Once I saw a little bird from the book Marigold, Unit 4. Let's first read the poem. It's a very interesting poem when a child, a boy, sees that a bird near the window. Once I saw a little bird come hop, hop, hop. I cried, little bird, will you stop, stop, stop? I was going to the window to say, how do you do? But he shook his little tail and away he flew. New words. Bird, bird, panchi. Hop, hop मतलब कूदना. Stop, रुकना. Tail, पूंछ. Let's see the meaning of the poem. Once I saw a little bird. एक child है, एक boy है, वो देखता है. क्या देखता है? एक bird देखता है. Come hop, hop, hop. और वो क्या करता है? बर्ड को आपने देखा होगा तो पैरों से वो हम जैसे चलते हैं वैसे वो चल नहीं सकते हैं. वो क्या करते हैं? कूदते हैं. एक जगह से दूसरी जगह वो हॉप करते हैं. आई क्राइड. तो वो जो बॉय था वो जोर से चिल्लाता है. क्या चिल्लाता है? बोलता है, बात करता है बर्ड से. लिटिल बर्ड, एक छोटे से पंछी, विल यू स्टॉप? क्या तुम रुकोगे? स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप. आई वॉज गोइंग टू द विंडो. देन द पोएट टेल्स अस कि मैं खिड़की के पास जा रहा था ताकि मैं उस बर्ड को करीब से देख सकूं. टू से हाउ डू यू डू, और मैं उसको पूछ सकूं कि तुम कैसे हो. बट ही शुक हिज टेल, हिज लिटिल टेल, लेकिन उसने क्या किया? उस बर्ड ने अपनी छोटी सी पूंछ को शेक किया, मतलब हिलाया. एंड अवे ही फ्लू, और वो उड़कर चला गया. So this is the poem. Once I saw a little bird from the 4th unit. Thank you.